हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ अंडर की बात। अब स्पेशल क्यों? स्पेशल इसलिए क्योंकि पिछले हफ्ते हमने एक हिमाकत की। हमने अपने पुराने एपिसोड के वीडियोस कुछ नामी गिरामी बॉलीवुड स्टार्स को भेजे टू गेट सम फीडबैक फ्रॉम देम। हमें पता लग गया है कि उन्होंने वीडियोस देख लिए हैं और आज हमें उनसे टाइम भी मिल गया है, सो वी गोइंग टू कॉल देम एंड गेट सम फीडबैक। सो लेट्स बिगिन। इट्स रिंगिंग। या हेलो हेलो सर नमस्ते सर। आई एम सुशांत, द होस्ट ऑफ अंडर की बात। जी सर, मैं ही हूँ सर। हमने आपको कुछ दिन पहले वीडियोस भेजे थे ना एपिसोड के। हाँ सर, मैंने ही फोन किया 7-8 बार। जी हाँ, मेरा ही पर्सनल नंबर है सर ये। हाँ नहीं सर, बस यही जानना चाह रहा था कि शो कैसा लगा सर आपको। फीडबैक कुछ दीजिए। तेरी माँ की रख। नेक्स्ट। हेलो, हाँ नमस्ते सर मैं सुशांत बोल रहा हूँ, होस्ट ऑफ अंडर की बात। हाँ जी सर, मैं ही फोन कर रहा था। एक्चुअली सर लास्ट वीक मैंने 8-10 बार फोन किया आपको। पहले रिंग करता था फोन, उसके बाद कट जाता था अपने आप। आई थिंक कोई नेटवर्क इशू होगा। हाँ जी। नहीं सर, मैंने तो सिर्फ इसीलिए फोन किया था। मैं जानना चाह रहा था कि कैसा लगा सर आपको हमारा शो, हमारी मेहनत। हाँ लातों के भूत बातों से नहीं मानते है ना। शराफत की भाषा सबको समझ में नहीं आती। सर क्या बात कर रहे हैं सर, आपके बारे में तो सुना है बहुत पोलाइट हैं आप, किसी से तू तड़ाक नहीं करते। आज लात घुसे, ये क्या है? तू के लायक है। तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया, समझा? जी मेरे मुंह मत लगना आपकी बात से। नेक्स्ट। हे भगवान, इस बार बचा लेना। हाँ सर, हेलो सर, मैं सुशांत बोल रहा हूँ, द होस्ट ऑफ अंडर की बात। हाँ सर, आपको कुछ वीडियोस भिजवाए थे आपके मैनेजर ने। हाँ जी सर, वो फीडबैक के लिए फ़ोन किया था। हाँ ऑल्दो सर, आपके मैनेजर ने बताया कि आपको तो शो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है और काफ़ी पसंद है। गौरी मैम को भी पसंद आया। एंड सर वो तो बोल रहे थे कि आप शो पे एज अ गेस्ट भी आना चाहते हैं। हाँ तो अब सर अपने डेट्स बता दीजिएगा और मैं अभी ये शो के बाद ना जो तू पी के आया मुझको भी पिलाना प्लीज यार। बहुत मजा आ रहा है मेरे को यार। हमको भी उतना ही मजा करना है जितना मजा तू कर रहा है इस वक्त। नेक्स्ट। हेलो सर, नमस्कार सर मेरा नाम सुशांत है। आई एम द होस्ट ऑफ अंडर की बात। सर जैसे आप केबीसी होस्ट करते हैं, मैं भी सर होस्ट करता हूँ। हाँ सर तो मेरा भी सर वही आ रहा है, नमस्कार देवी और सज्जनों। सर जोकिंग। हाँ सर, वो अभिषेक भैया ने बताया कि आपने एपिसोड देख लिया। हाँ तो सर अब आप सर जेन्युइनली बताओ सर आपको कैसा लगा। Today's guest is somebody from the field of cinema. He started his film career as the lead of Love, Sex or Dhoka, directed by Dibakar Bannerjee. He then moved on to work with some really big names such as Amitabh Bachchan, Piyush Mishra, Pankaj Tripathi, and the list is actually pretty long even after that. Now, one of his most recent projects, Mastram, where again he's the lead, is recorded to have one of the highest views for any Indian web series till now. He's my very dear friend and an absolutely daring actor too. Anshuman Jha, everybody. Please welcome Anshuman Jha, everyone. Yes. Welcome to the show. Thank you so much for coming on and giving us time from your busy schedule. Literally, it was busy. I know Thank you it. for having me, and I'm sorry for having. I wanted to do it once I got through the traveling and all of that, so that we can do it peacefully rather than. So I'm glad. Thank you for waiting and being patient, and I'm really excited because I am always excited with what you are up to. क्योंकि आप चुलबुल हो। Chulbul. नहीं, I love that about you, Sushant. I've always told you that there's a nutcracker बच्चा in you, and I really have a lot of respect and love for that. So yeah. I'm glad you say that. Thank you so much. Now you warmed me up, so we will straight away go into the first segment of our show. Yeah. And this is called Ye Kyun. Why is Anshuman Jha? Why did you choose to be an actor? क्यों भाई, क्या हुआ ऐसा? यार मैं 5 साल का था, इलाहाबाद में रहता था। वहां पे एक VHS कैसेट था त्रिदेव नाम की फिल्म का, जो मेरे घर पे आया।
हाँ. ट्रू स्टोरी. और वो Yeah. VHS की दुकान बंद हो गई. What? वापस ही नहीं किया. So by default मैंने त्रिदेव कम से कम 50-60 बार देखी, और उसमें नसीरुद्दीन शाह का एक गाना था तिरछी टोपी वाले, और नसीरुद्दीन शाह के सारे डायलॉग्स बाय हार्ट करते हैं मुझे. Right. एंड उस टाइम आप 5-6 साल के होते हो तो एक्टिंग नॉट एक्टिंग उस टाइम ये सब इतना एक्सपोजर नहीं था ना, बट आई फेल इन लव विद नसीर साहब. एंड आई वांट एंड विद सनी देओल. आई एम नॉट लाइंग, आई लव्ड एवरीवन इन दैट फिल्म, एंड अमरीश पुरी Yeah. and Yeah. Jack Frost and everyone. So I wanted to do that. I wanted to mouth those lines. And this is a true story. When I met Nasiruddin Shah for the first time in my life, I told him shamelessly that I fell in love with acting after watching Tridev. It's a running joke between him and me even now, because obviously Nasir Saab is Nasir Saab and there's so much great work that we admire and respect. And probably Tridev is not on top of his. Sure. But that's the beauty of cinema. You don't know when it affects who and where and how. Like I knew from that point on that this is what I want to do. But you know how it is in a small town in the 90s. If a young kid, you told your parents you want to be an actor. Yeah. Like ये सब तो ठीक है, hobby है, और क्या करोगे? So honestly शुरुआत ये हुई, और फिर मेरी किस्मत अच्छी थी कि my sister was in Bombay. So while I was in school in Delhi, summertime workshops के लिए पृथ्वी आना जाना होने लगा, क्योंकि my sister used to work in Bombay, so she used to be like दिन भर अकेले रहेगा. She said, what do you want to do? So पृथ्वी workshops में घुस गया, और मैं दिन में 2 workshop करता था, 10 से 12 और 3 से 5. और 12 से 3 के समय में पृथ्वी में बैठा रहता था कैफे में, और जो रिहर्सल कर रहा होता था मकरंद देश पांडे, दुबे जी, उनकी रिहर्सल में घुस जाता था. और मैं 15-16 साल का था, तो कोई रोकता नहीं था. और ऐसे ही देखते देखते संजना कपूर ने मुझे एक प्ले में कास्ट कर लिया. थ्रू दैट not just the workshop, so that waiting period in between got really handy. And I really think more than learning from the workshops, I actually ended up getting a lot more about the patience that actors need to have from that 3 hour that I used to sit doing nothing and just watching. Or Ronit Roy or Anurag Kashyap and all these people at that time used to visit Prithvi. Obviously, I didn't know at that time who they are. But because they were also struggling at that time and I was just a teenager. But it's very interesting to have seen that journey as a person, and then for people who are such admired actors or, you know, makers. I'm sure. Yeah. So ये क्यों यूं कि नसीर साहब ने त्रिदेव नाम की फिल्म की थी. Hence Anshuman Jha decided I'm going to be an actor now. हाँ, मुझे यही करना है. तिरछी टोपी वाले, bro, I love that song. That song was always, it was a cult यार, बहुत नाचे उस पर. उसका जो look है ना, with the cat and you know, there are very few points in life where Anshuman, I've seen you go, where, you know, I see that expression on your face कि मेरे पास words नहीं, and I've seen you today do that after a very long time. So I can sort of feel your vibe right now. Yeah. No, every time I talk of Tridev, na, I am that 5-year-old boy. If you show me Tridev today, I'll see it with the same excitement, and I want to do that. I hope that film is remade someday and I get to play that part. That's like, sure. I really hope that happens. I hope so too, and we wish that happens when we see you on screen doing that. Yeah, मजा आ जाएगा. Yeah, man, that'll be a full circle. Yeah, and then when you get an award for that movie, thank us. Say I went on Andar Ki Baat, and the universe prophesized. It heard me through this show. So we are literally connecting you to God, Anshuman. We are that important. You want to give me some credit there? I went under. Shit, man. That's a misuse of my name. Okay. All right. So, Anshuman, as you can see, magically out of nowhere, my clothes have changed. And I'm in, that's nice. I like that reaction. Very good. In fact, there's going to be a lot of ah and ooh now once we go into this segment. Okay? Because that's why the show is called Under, right? Because of the ahs and oohs. This man will put me in trouble. I hope my mother does not see this episode. Anyway, so let's get serious. So our next segment is called social media trial. So वकील भी मैं हूँ और जज भी मैं हूँ. So let me tell you this. Yeah. Whatever we tell you now, these are not just questions. These are our views that we feel are right. So no matter what you say, it doesn't matter.
We know what is right, what is wrong. Because this is a so-called democracy, we're going to give you a chance to redeem yourself. But whatever, everybody knows I love China and the political system, so I don't care. So yeah. Now Okay, please ये virtually इस किताब पे हाथ रखिए और हाँ, आप कसम खाइए. मैं कसम लेता हूँ कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा. प्रॉमिस. अब अंशुमन क्या है, आपको अपने स्क्रीन पे एक इमेज दिखेगी. इसमें आपने दो आम पकड़ रखे हैं. हाँ. तो पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, हमारा पहला इल्जाम ये है कि आप अपने सोशल मीडिया पेज के थ्रू आम बेचने की कोशिश कर रहे हैं. तो आप एक्टर नहीं है, आप एक फार्मर हैं who is now posing to be an actor. What do you say about that? यार वो क्या है ना, मुझे कोई आम सूत्र के ऐड नहीं देता है. तो मैंने सोचा खुद आम सूत्र बनाऊं अपने सोशल मीडिया पे. Okay. और लंगड़ा मेरा फेवरेट आम है और मुझे पता नहीं था कि लंगड़ा लंगड़ा क्यों कहलाया जाता है. तो ये सवाल मेरे दिमाग में आया और मैंने कहा कोई मुझे पेप्सी वगैरह के तो कैंपेन्स में कर चुका हूँ, किसी ने मुझे कभी मैंगो ड्रिंक नहीं दिया है. सो आई फेल्ट लाइक पोजिंग, यू नो, ट्राइंग टू बी like I'm not sexy but I tried to be. If you see that picture, I have tried to be very, you know, I'm holding it. तो बेसिकली आप कटरीना कैफ बनने की कोशिश कर रहे थे, आप ये बोल रहे हैं. The male version of Katrina Kaif, and my next film is also Hum Bhi Akele Tum Bhi Akele, in which I play a great gay protagonist. So see, I was in Candid for you. Okay, although it's a logical answer, but as I told you, जो भी आप बोले हमें फर्क तो पड़ता नहीं है क्योंकि सोशल मीडिया ट्रायल है, हमारे व्यूज है. Anyway, so first इल्जाम guilty as charged. Going to the second one, उसी सेम उस पे हमने फोटो पे कुछ कमेंट्स पढ़ने की कोशिश की है. मैं जरा अपनी ऑडियंस को बता दूं कि लिखा क्या है. अच्छा. While it's on the screen, मैं थोड़ा उसका कुछ पार्ट पढ़ना भी चाहूंगा. एक कमेंट है जिसपे लिखा है, vaguely remember reading something about Alfonso and he had a farm in Devgarh, Maharashtra. Is it true? I might be completely wrong here though. Anshuman Jha. Some person wrote that. You wrote. True. I also read. और ये बिल्कुल सही है. कोई पोर्चुगीज वाइसरॉय थे, अल्फोंसो डी एल्बे व्हाटएवर, आई डोंट केयर, हु कॉन्कर्ड गोवा. एनीवे, दिस इज रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है. नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं. अब ये पार्ट है जहां पे हमें लगता है आपने कुछ लाइन क्रॉस की. अभी आपने लिखा है, डॉक्टर वायल नेने इन हिज रिसर्च पेपर मैंगो थ्रू मिलेनिया पब्लिश्ड of Asian agri history 2001 blah blah blah. इतने नंबर्स मुझे समझ नहीं आते. As per Dr. Nene, the traditional varieties of mangoes in India were that called sucking type of mangoes. Let me tell the audience. Indians preferred those varieties with their soft pulp that could be squeezed by hand and sucked out. Wow. इसके आगे, however, when the Portuguese began exporting mangoes to Europe, they wanted one that could be served on the table. Basically, firmer varieties of mangoes that could be sent back home. ये अभी इसके आगे भी है. किसी का उस पर रिस्पॉन्स भी आता है जिसमें उन्होंने लिखा, I see. ऐसा लग रहा है इन्हें समझ में आ गया. What's the fun in eating cut mangoes? What a waste. The real fun is चुस्कीज. पहले तो आप मुझे ये बताइए, ये आम की बात हो रही है या किसी और काम की बात हो रही है? देखिए, मुझे यकीन हो गया है कि मैं बिल्कुल करेक्ट शो पे हूँ क्योंकि आपको अंदर और अंडर की बात दोनों समझ आ गई. बाय द वे, करेक्शन, मैंने किया था पोज में लंगड़ा आम के साथ. किसी और ने अल्फोंसो पे कमेंट किया तो मैंने अल्फोंसो की चुस्की और नॉन चुस्की वाली बात की. Now let me stop you there, please. You don't come in here on our show and try to tell us what is right and wrong. We will tell you what is right and wrong. Okay? Sorry. We will tell if we are wrong. Nobody tells us. अब चलते हैं लास्ट पार्ट पे. तो अब आप ये बताइए कि जब आपने ट्विटर पे ट्वीट किया एक दिन, और ये काफी पुराना ट्वीट है आपका, आपने कहा कि आपने 3 घंटे में एक पूरी किताब खत्म कर मारी. अल्केमिस्ट, पाउलो कोएलो. आपने वो डायलॉग सुना है, किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो सारी कायनात? ये एक्चुअली हिंदी पिक्चर का डायलॉग नहीं है, ये उस किताब में लाइन है जो हिंदी सिनेमा के राइटर्स ने ट्रांसलेट करके उस फिल्म में यूज कर लिया है. ट्रू स्टोरी. तो मतलब आप ये बोल रहे हैं कि शाहरुख खान झूठे हैं? शाहरुख खान झूठे नहीं है, लेकिन जिन्होंने नहीं, अभी आपने बोला कि शाहरुख खान झूठे हैं, मैंने सुना आपको. दिस इज एवरी, प्लीज ये लिख के रखे, एक नया इल्जाम है. ये आदमी बड़े बड़े स्टार्स को झूठ भी बोलता है हमारे शो पे आके. एनीवे, ये हमारे 3 बड़े इल्जाम थे, और शाहरुख खान को झूठा बोलने के लिए आई फाइंड यू गिल्टी ऑफ डूइंग ऑल दीज थिंग्स.
Yeah. Yeah, I'm talking about the goat Shah Rukh, who was in Ye Hai Bakrapur. His name was Shah Rukh. Not the. देखिए, please don't use this show as an instrument to promote yourself. This is not what is happening. We will promote ourselves using your views. You should know that. Okay, Right. please. Right. ये सिंपल Right. सी बात है. Sorry, तो sir. मैं ये बता दूं कि जितने भी इल्जाम हमने आप पे भी लगाए हैं, मुझे लगता है सिरे से A to Z सबके सब बिल्कुल सही है. बट उसके बावजूद भी बिकॉज हम देख रहे हैं कि आपकी फैन फॉलोइंग बड़ी अच्छी है, बड़े अच्छे अच्छे लोग आपको फॉलो करते हैं और जी, आपका जी। काम स्क्रीन पे अच्छा है. जी. या तो इसलिए मैं आपको आखिरी बार जाने दे रहा हूँ ओह, धन्यवाद. विद वार्निंग कि बहुत जी. सोच समझ के सोशल मीडिया पे जो भी आप डालते हैं डालिए, क्योंकि हम हमेशा आपको देख रहे हैं. एंड वी बैक. Yes, Anshu. I know, yeah. This is the magic of our show. I know. चमत्कार. That's full on. I know you're mocking us, but कोई बात नहीं. So now Yeah. we'll go into our next segment. It is Achha. called Google Wants to Know. Google wants to know. Sure. Google is our best friend now, and he gives us questions. So we ask him, भाई अंशुमन झा के बारे में, what do you want to know? And he's given us a big list of questions. This is brand placement. अंदर की बात. Thank you. All right. So I'm going to start. And are you ready? I am ever ready. Born ready, sir. Fire. Awesome. Now, on the sets of Mastram, what was the most awkward moment for you? The most awkward moment for me, honestly, used to be when the girls had to shift or change. So I was more concerned about making sure it's done respectfully, and I was extremely shy actually at most of the times, to be honest. So Amanda Cutting, intimacy directors हैं जिन्होंने Magicians, Game of Thrones ऐसे shows पे काम किया है, वो Right. कहती थी जहाँ लड़का लड़कियों से ज्यादा shy है. So, it was a running joke on set because कुछ भी जैसे ही कट होता था ना, मैं ऐसे आंख बंद कर लेता था. Used to be, because they had privacy protocols for the crew, Of course, not for of me. course. But when she used to, they used to call privacy protocols, and I used to just go like that. So she used to say, "No, you don't do it because you need to get into the mood and act." And I said, "No, don't worry, I'll get into it." Yeah. That switch, because I was not used to it, because I'd never done it on screen. But it's amazing how they managed, how smoothly and professionally it was done. Yeah. Okay. When was the first time you read Mastram? I have never read a Mastram book. Only during shoot, I read some pages of few of them, because I've never had, how do I put it? It's not been an area of interest to read erotic books per se. How did your family react when they got to know that you will be doing Mastram? Your friends, family, everybody. Yeah, my family kind of have made peace since my debut film was called LSD. In fact, LSD के time में बड़ी interesting story है. मेरी मम्मी गई स्टूडियो में और प्रीमियर, और मधुर भंडारकर, शेखर कपूर, दिबाकर बैनर्जी, in conversation, and my mother goes and pokes Dibakar. Dibakar tells Dibakar, my mom, and Dibakar is very sweet, so he meets mummy, and Dibakar says, कैसी लगी आपको पिक्चर? तो मम्मी कहती है, अच्छी थी. When you killed him, you should not have butchered him so much. There had been one swift move. I could it's one of the best conversations. And there was Madhur Bhandarkar, Shekhar Kapoor, they were all looking and enjoying the conversation. And the Bhagavad gave her a big hug. But it was a very, it's moments like that, like complete disregard for the fact that you're sitting at Yashraj and, you're having it's a big deal, man. I mean. Absolutely. Yeah. So how did he respond? What did he say after that? When she said that? He just gave her a hug and he smiled and he said, he didn't really react to the question. He was just overwhelmed by the sweetness of the question. I'm sure. Yeah. So my family is pretty cool. Yeah. They know if I pick something up, it will be for a good reason. Yeah, I'm sure. Lovely. So my next question to you is, have you ever had a time where, a co-actor threw tantrums on set due to which maybe your schedule got affected? So कुछ ऐसा हुआ है कभी? Yeah. A couple of times. Shoot, बताओ ना. We तो want अंदर की बात ना. नहीं. Once it happened that I was shooting for a film with a male co-actor and
he didn't know the scene. That was a big problem. And Yeah. he had come on set smoked up. So that was the other big problem. Oh. So he was Oh. completely at sea. So उसको react करना था किसी चीज पे जो वो कर ही नहीं रहा था because इन नहीं जानना एक problem थी और fully control में नहीं होना दूसरी problem थी. So this is interesting. The guy comes on set fully like Bholenath and then doesn't know what to do on set. Yeah. और how does a director react to it? क्या होता है ऐसे में? आपको पता है this guy is messing up left, right and center. What do you do? Yeah, a film production is such a big unit. There are hundreds of people. There's so much at stake. Every hour is expensive. So I feel very bad for the filmmaker because you are asking. See, no tools hai yaar. As actors, we are only parts. Yeah. The biggest challenge is for the filmmaker because he's trying to tell the story, right? So मुझे सबसे बुरा filmmaker के लिए लगता है कि बेचारे का एक scene खराब हो जाएगा. And location he'll only have a few hours. So he has to get it done. Now exactly. It doesn't. So then you do a below, and it's so it always ends up showing, and it affects the film. That's true. Yeah. Okay, so I'll go to the next question now. What do you love? Yeah, and hate about the performing arts field. So one thing that you love and one thing that you hate about the performing arts field. A very good question. I love the fact that I think I'll speak from a personal point of view, only from where I come. Me, acting is in a way my alter ego. So it helps me express and maintain my balance. The negative is exactly a mirror of that. Because it gives you that freedom. A lot of people jump into it without really preparing for it. So कोई भी मुंह उठा के होता है कि हम कर लेंगे. Whereas it's serious. You know, सिर्फ बाल बना के, जिम जाके, बॉडी बना के और अच्छे कपड़े पहन के आजकल यार देख इतना सॉलिड बैक स्टाफ है कि अगर आपको अच्छा लगना है, people can make me look good, man. I mean, I can look better than so much baggage can be given to me in terms of costume and hairstyle and blah blah blah. So वो दिन को अच्छा लग सकता है यार. If I can look good, anyone can look good. The point is, what do you do when the script comes? Yeah. Where is the beat? Do you know the beat? Do you understand the pulse? So the negative of our performance art industry is that a lot of people get into it for the wrong reasons and get into it for fame or the money. If your starting point is fame, money, popularity, then you're screwed because then you'll end up eating a lot of legit work for people who are, which is the problem with the system right now. Now, Anshuman, cinema, you are a core cinema person. Like, out of the 14 major projects on the screen that you've done, one is a web series, 13 other movies, out of which 9 are lead, 10 are leads that you've done. I've done about 25 plays also, yeah. So technically, theater would be the first. No, but talking about the medium of camera, television is one place where we've not seen you in a soap or something. And so my first part of it is, if there is a possibility of you coming on. Number 2 is, what are your views on what you see on television? Because there is a stark difference between the content on television and the one on, social media platforms or even cinema for that matter. I don't watch television firstly. So I don't have an opinion on TV shows in India, Indian TV shows. Yeah. Because it doesn't interest me. So I have a very simple, something I don't watch, I'll never do. The thing is, films and web series give you that prep time, that space. Artists are respected more, for a lack of better word. Same with ads. So if I have done 20 ad campaigns, I've also left that many because not because of anything else, because the script is important. अभी टीवी में क्या होता है, आपको स्क्रिप्ट शुरू में देते ही नहीं है क्योंकि वो पूरा नहीं होता है. It is on the go. So it's a personal thing for me. I have a problem with not having a script because the script is like sacrosanct. It's a Bible for me. So I can therefore not be a part of a TV show till it has a locked bound script, which I can then prep for, work on, workshop on. Yeah. Because then there'll be a process which we'll all enjoy. My last question to you would be, who is your role model?
who do you take as your role model? Tendulkar, yeah. Sachin Tendulkar. I've only had one hero all my life. Because of that single-minded focus on, see, talent will only take you so far. Your attitude is what determines your success. And by attitude, understand, I just don't mean success externally. Internal success is dependent on your attitude. कि आपको एक ही काम मिला, लेकिन आपने उसको इतना अच्छा किया कि आप खुश हो. Yeah. कितने लोग होते हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन कुछ काम ही नहीं करते. कितने लोग होते हैं जो बहुत कम टैलेंटेड होते हैं, लेकिन बहुत काम करता है. Yeah. कितने लोग होते हैं जो किस्मत पे ही खेलते रहते हैं. So I think कि Tendulkar, because Tendulkar was the most talented batsman of that era. So Bob, I think we have everything what we want, and with that I shall conclude the show. And thank you so much for coming on. Boring, man. No, not for me at least. Edit कर देना, छोटा कर देना सब कुछ. हाँ, कुछ तो करेंगे. All right, thank you so much for coming on, Anshuman, and I'll see you on the other side.